Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna. A very warm welcome to all of you for today's session on the Srimad Bhagavatam. We'll start our session with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayamudiraye. Nashtaprayeshu Putreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktirabhavati Nashti. So we discussed in the previous session, Mahatma Vidur, he is asking from his spiritual master Maitreya Rishi about this creation. And we discussed in the previous session that in the end, the last shloka that we discussed in the previous session, Mahatma Vidur is asking about the eternal time, the time element, the significance, the characteristic of time element in this material world. And that's what now Maitreya Rishi will be answering. So today we'll begin our discussion with text 11, shloka number 11 of the 10th chapter of the 3rd canto of Srimad Bhagavatam. Maitreya Vacha Gunavyatikkarakaro Nirvishesho Pratishtitah Purushastad Upadanam Atmanam Leelaya Srijat. Maitreya Vacha Gunavyatikkarakaro Nirvishesho Pratishtitah Purushastad Tadupadanam Atmanam Leelaya Srijat. Translation. Maitreya said, eternal time is the primeval source of the interactions of the three modes of material nature. It is unchangeable and limitless, and it works as the instrument of the Supreme Personality of Godhead for his pastimes in the material creation. So Maitreya Rishi is saying, Guna Vyati Karakara. Vyatikara. Vyatikara means interaction. So Guna, the three modes. Guna means the three modes. Sattvagun, Rajogun, Tamagun. Guna Vyatikara. Time element is the cause of interaction of the three modes of material nature. Nirvishesho Apratishtitah. And this time element is infinite and formless. Time element has no form because time is energy, impersonal energy of the Lord. So that is why here the word is used Akaro Nirvisheshu. Time element is the impersonal feature of the Supreme Lord. Purushas Tad Upadanam.
And Upadan means the instrument or one of the feature of the Supreme Lord. Purushas means the Supreme Lord. So Purushas Tadupadanam Atmanam Leelaya Srijat. It acts as an instrument of the Supreme Lord, and because of this instrument, the Lord performs his Leela. Leelaya Srijat. All the pastimes of the Lord in this material creation is manifest because of the time element of the Lord. Right? Upadanam means the time element is the impersonal instrument of the Lord which helps him in manifesting his pastimes in this material creation. You see. So basically, this time element is the impersonal instrument of Krishna. Krishna says in the Bhagavad Gita, when Arjun asks, so when Krishna shows his universal form to Arjun in the 11th chapter of the Bhagavad Gita, and Arjun asks that because Krishna happened to be the friend of Arjun, but when Krishna showed his universal form to Arjun, because Arjun requested that I want to see that form of yours. So after that, Arjun becomes bewildered when he saw the universal form of the Lord. And then he asked the Lord that, my dear Lord, who are you? So then what did the Lord say? Kalosmi Bharatarshava. That Arjun, you are seeing me as time element. So I am the time element. So time element is the impersonal feature of the Supreme Lord, which acts as an instrument of the Supreme Lord in this material creation. Because no one knows the source of time, the beginning, the middle, and the end of time. Right? Time keeps a record of everyone. Time element is like, it's a recording feature of the Lord. It records everything. Just like you have a camera, CCTV camera nowadays people keep. So the CCTV camera records everything, isn't it? So time is the impersonal, all-pervasive feature of the Supreme Lord, all-pervasive instrument of the Supreme Lord. All-pervasive means it is present everywhere, this time element. And this time element is the feature of the Lord, which records everything in this material creation. Everything is recorded by time element. Right? It records the creation, maintenance, destruction of this universe, of the creation of a living entity. Everything is recorded by the time factor. That is why one can cheat everyone, but one cannot cheat Krishna. Why? Because he has an instrument, time factor, everywhere, which records everything. So, this creation is made possible by the time element of the Lord. And that is why time element is the expansion of the Lord, one of the expansions of the energy of the Supreme Lord. And it is impersonal. It does not have form because time factor is all pervasive. The Lord has form, but his energy, time element does not have any form. It's the impersonal feature of the Supreme Lord. Impersonal means no form. So time is, it's a very special feature of the Supreme Lord.
which is changeless, indivisible, and formless instrument of the Lord. In the material world, many people, they calculate time according to speed. In mathematics, generally people calculate time element with respect to speed, velocity, displacement, energy. So in all these calculations, there is time factor involved, especially with respect to speed. When we calculate the speed of a person or of a vehicle, we calculate it with respect to time, isn't it? In very simple terms, if you see, speed is equal to distance by time, right? But actually speaking, time is because without time, you have all mathematical calculation, they involve time. All physical aspects of modern physics, they involve time. So very few people actually know the reality of time element. Right? And sometimes people think time is relative, but no. Time has nothing to do with relativity in this material creation. In fact, everything is dependent on time factor. Everything in this material creation is calculated on the basis of the facility which is given by the time element. Time factor gives us facility to perform activities in this material creation. And that facility is given on the basis of past recording, which is done by the time element only. Very beautiful. How Maitreya Rishi is describing very beautifully. Right? So time is the most important measuring yardstick in this material creation. Because of time factor, we calculate past, present, and future. We talk about past, present, and future. But actually, time factor has no beginning and no end. It's endless, it's limitless, it's infinite, and present everywhere, all pervasive. And that is why in this material world, everyone is racing with respect to time. Our race is against time. Because that's what in the material world, people say. That even one moment if you lose, you cannot get it back, even with millions of dollars and rupees. Right? So, even a moment of time wasted without Krishna consciousness is the greatest loss in life. If a person wastes even one moment in his life without Krishna consciousness, it is the greatest loss in life. So basically, Krishna, that's what he talks about in the Bhagavad Gita. That Maya Dhakshena Prakriti Suyate Sacharacharam Hetu Nanena Kante Jagad Viparivartate. This whole material energy is working under my direction. And the energy of the Lord, or the instrument of the Lord, which acts as the, because of which the Lord is managing everything in this material creation, is the time factor. So everything what we see in this material creation is because of the time factor, which is one of the representations, one of the expansions of the Supreme Lord, one of his impersonal expansions of his energy is the time factor. And that's what Maitreya Rishi is talking about here. That guna vyati karakaro nirvishesho pratishtitaha.
So this time factor is nirvishesha, means impersonal feature of the Supreme Lord. Purushas tadupadanam. Purushas means the Supreme Lord. His instrument is the time factor and it helps him in his pastimes in this Leelayas Rijat. Leela means the pastimes. So this time factor helps in manifesting the pastimes of the Lord in this material creation. Because the Lord acts as Vishnu, Shirodakshay Vishnu, Mahavishnu, Garbhodakshay Vishnu. So these are Purusha avatars. So all their activities are going on. And the instrument of Lord Vishnu, Garbhodakshay Vishnu, Mahavishnu, Shirodakshay Vishnu, the instrument of Lord Vishnu is time factor, time element. Now text 12, shloka number 12. Vishwam vai brahma tanmatram sansthitam Vishnu mayaya Ishvarena parichinnam kalena vyakta murtina. Vishwam vai brahma tanmatram sansthitam Vishnu mayaya Ishvarena parichinnam kalena vyakta murtina. Translation. This cosmic manifestation is separated from the Supreme Lord as material energy by means of Kal, which is the unmanifested impersonal feature of the Lord. It is situated as the objective manifestation of the Lord under the influence of the same material energy of Lord Vishnu. Now you see, what is Maitreya Rishi saying here? So he's saying, Vishwam vai Brahma tan matram. Vishwam means this material creation. Brahma tan matram samsthitam. So Vishwam vai, this material creation is Brahma. Brahma means Krishna, the Supreme Lord. Tan matram. This material creation is one of this creation of the Supreme Lord, right? So Sanskritam Vishnu Mayaya Ishwarena Parichinnam. Parichinnam means, chinna means to cut or to separate. So Sanskritam Vishnu Mayaya Kalen Avyakta Murtina. Very important shloka. Very, very important shloka. Vishwam vai Brahma tan matram Sanskritam Vishnu Mayaya. This material world is situated as one of the energy of the Supreme Lord, and this is Vishnu Mayaya, Vishnu Maya. This is Maya of Lord Vishnu. This is creation of Lord Vishnu. Maya means energy, the illusory energy of Lord Vishnu. Ishwarena. Who is Lord Vishnu? Ishwar, Supreme Personality of Godhead. Parichinna. So this material world is separated from Lord Vishnu. Kalen Avyakta Murtina. The energy of the Lord. You see, Avyakta Murtina. The impersonal feature of Lord Vishnu is time, which we discussed in the previous shloka. Now, this impersonal feature of the Lord, which is time, it separates matter or material world or the material creation from Lord Vishnu, from the Supreme Lord. It is the time factor which separates matter from spirit. Spirit is eternal. Matter is controlled by time. You see. So the energy of the Lord, which separates material creation from the Lord, is time. Many times in these sessions, I have spoken about it, isn't it? That material creation is separated from the spiritual creation by time element.
Kalena Vyakta Murtina. You see, it is mentioned here. So Vishwam by Brahmatan Matram Sansthitam Vishnu Mayaya Ishwarena Parichinnam Kalena Vyakta Murtina. So this material world looks different from the Lord because of the Lord's energy, which is time factor. Because the spirit and matter both have Krishna's energy, right? Both spirit and matter are Krishna's energy only. Kale Navyakta Murtina, Ishwarena Parichina. So this material energy is separated from the Lord because, and the separating factor is the time element, right? So and this time element, as we discussed in the previous shloka, that this time element records everything. This time factor of the Lord, impersonal feature of the Lord, is like a recorder, just like a camera recorder or a tape recorder. It keeps recording everything, isn't it? So the time element also is just like a tape recorder, you know, it records everything, keeps recording everything. Just like a tape recorder, you record your voice and later on anytime you can hear it. Now at that time that person is not speaking, but still his voice is there, isn't it? So as the recording is situated on the tape recorder, so similarly this whole material energy is situated as such because of the time element Kal. So that's what here Maitreya Rishi is saying. And that's how it is separated from the Lord. Now text 13, shloka number 13. Yathedanim tathagre cha paschadapyetadidrisham. Yathedanim tathagre cha paschadapyetadidrisham. Translation. This cosmic manifestation as it is now, it was the same in the past and it will continue the same way in the future. You see, now Maitreya Rishi is saying that because of the time factor, because time factor is controlling everything. So, yathe danim tatha agre. Agre means in the beginning. Paschadapi. Paschad means afterwards, later on. Etadidrisha. So, this material creation as it was beforehand, it is called past, present, and future. So, as it was before, same way it is now, and the same way it will continue in the future. Right? So, this material world keeps getting created and keeps getting destroyed because it is temporary phenomenon. But the energy, the material energy of the Lord is eternal.
Again and again, that's what the Lord says in the Bhagavad Gita also. That bhutva bhutva praliyate, bhutagramam sa evayam, bhutva bhutva praliyate. So again and again there is creation, and again there is destruction. So matter may get destroyed, but material energy of the Lord is reality. It is not illusion. So the activity of the time element, because of which this material energy keeps getting created, keeps getting destroyed, this is not illusion. This is not, it's not that it is false. No, material creation is real. And it is all going on because of the impersonal energy of the Lord, which is the time element. So time element makes it happen. Creation, destruction, maintenance. And the Lord enacts his pastimes through the time element in this material creation. So that is why this material energy, material universe, material world keeps getting created, keeps getting destroyed, keeps getting, it is always maintained by the time factor. But it looks like it is getting created and getting destroyed, but the energy, the material energy of the Lord, that is eternal. Of course, it is created for living entities who are against the Lord, but the material energy is eternal. Just like spiritual energy is eternal. But because material energy is separated by time factor, so because of time, it has past, present, and future, it keeps getting created and keeps getting destroyed. That is the difference. In the spiritual creation, there is no, in the spiritual creation of the Lord, there is no destruction, there is no creation. It is eternal. This material creation is also eternal. The energy is eternal. But because of the time factor, it keeps getting created and keeps getting destroyed. There is a time when it is manifest, there is a time when it is unmanifest. Spiritual creation is always manifest. So that is the difference between matter and the spirit. So we'll discuss more about it in the next session. We'll stop here today. All of you can like the video, comment, subscribe to our YouTube channel. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
विहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय राधा माधवा जय कुंज विहारी जय गोपी जन गिरिवरधारी जय राधा माधवम जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय राधा माधवा जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivardhari. Jai Radha Madhava, Jai Kunja Vihari, Jai Gopi Jana Vallabha, Girivardhari. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivardhari. Jai Radha Madhava, Jai Kunja Vihari, Jai Gopi Jana Vallabha, Jai Girivardhari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
हरे कृष्णा। आप सबका बहुत स्वागत आज के भागवत के सत्र में। प्रार्थना के साथ अपने सत्र को प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु तत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हमने देखा अपने पिछले सत्र में महात्मा विदुर इस अध्याय में अपने गुरु मैत्रेय ऋषि से प्रश्न कर रहे हैं इस सृष्टि के बारे में। और हमने जो अंतिम श्लोक देखा था अपने पिछले सत्र में, उसमें महात्मा विदुर अपने गुरु से मैत्रेय ऋषि से प्रश्न कर रहे हैं काल के बारे में, कि समय के बारे में वो जानना चाहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मैत्रेय ऋषि काल के बारे में, काल क्या है, समय क्या है, उसकी क्या अवस्था है, उसके बारे में अब मैत्रेय ऋषि बताएंगे। तो आज की चर्चा हम प्रारंभ करेंगे तीसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक से। मैत्रेय उवाच गुणव्यतिकराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठितः पुरुषस्तदुपादानम् आत्मानं लीलया सृजत्। मैत्रेय उवाच गुणव्यतिकराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठितः पुरुषस्तदुपादानम् आत्मानं लीलया सृजत्। Translation, अनुवाद। Maitreya said, eternal time is the primeval source of the interactions of the three modes of material nature. It is unchangeable and limitless, and it works as the instrument of the Supreme Personality of Godhead for his pastimes in the material creation. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि शाश्वत काल इस जगत के तीनों गुणों के संबंध का कारण है। वो शाश्वत है और अनंत है, और वो भगवान का निमित्त है, जिसके कारण उनकी सारी लीलाएं इस जगत में होती हैं। अब आप देखिए, मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं गुण व्यतिकराकारो। गुण व्यतिकरा, व्यतिकरा का मतलब होता है संबंध, या हम कह सकते हैं आदान प्रदान, या हम कह सकते हैं परिवर्तन। तो ये जो प्रभाव है, परस्पर प्रभाव जो है तीन गुणों का, आपस में जो तीन गुण मिलते हैं, वो जो मिलना होता है वो किसके कारण होता है? काल के कारण, समय के कारण। वही मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं गुण व्यतिकराकारो, और निर्विशेष। और ये जो काल है, ये जो समय है, ये कोई इसका, ये कोई रूप नहीं है इसका, निराकार है, निर्विशेष है, अप्रतिष्ठित पुरुषस तदुपादानम। और ये पुरुष यानी ये भगवान का निमित्त है। ये काल जो है भगवान की शक्ति है, उनका एक निमित्त है। आत्मानम लीलया सृजत, जिसके कारण वो इस सृष्टि में अपनी लीला करते हैं। इस काल, ये जो काल है, ये जो समय है, ये भगवान की शक्ति है, निराकार है, अनंत है,
जो उनकी लीलाओं में उनको सहयोग करता है। तो ये जो समय है ये भगवान की ही शक्ति है। भगवान का तो स्वरूप है, लेकिन काल का कोई स्वरूप नहीं, और ये अनंत है, सर्वव्यापी है, सभी जगह उपस्थित है। जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है, हर चीज को रिकॉर्ड करता है, उसी प्रकार से ये जो समय है, काल, जो भगवान की शक्ति है, ये सृष्टि में जो कुछ भी चल रहा है इसको रिकॉर्ड करती है, इसको, इसका लेखा जोखा सब काल के पास रहता है। तो इसका सारा लेख या ये सब दर्ज रहता है काल के समय के द्वारा, ये सब दर्ज किया जाता है, इसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये जो पूरा जगत हम देख रहे हैं, इसका स्रोत जो है वो यही काल है, समय जो भगवान की शक्ति है, ये इस जगत का स्रोत है, और ये स्वयं भगवान का ही विस्तार है। ये जो काल शक्ति है ये भगवान की का ही निमित्त है और उन्हीं का विस्तार है, और निर्विकार और निर्विशेष, निराकार, निर्विकार, निर्विशेष। इसका कोई रूप नहीं है, अनंत है और सर्वव्यापी। लेकिन इस जगत में जो कुछ भी चल रहा है उसको दर्ज करना, उसको रिकॉर्ड करना, वो काल जो है वो करता है। गणित में भी समय की व्याख्या मुख्यतः गति के बारे, गति, जब किसी चीज की गति को हमें पता करना पड़ता है, जब किसी चीज की हमें गति की गणना करनी होती है, तो हम उसको काल के संदर्भ में ही किसी की गति हम बताते हैं। गति का मतलब दूरी को जब हम काल से विभाजित करते हैं तो वो गति बताती है किसी भी चीज की। तो कोई भी भौतिक जो ज्ञान है, भूगोल का विज्ञान हो गया, गणित का विज्ञान हो गया, वो बिना काल के नहीं हो सकते। तो इस पूरे जगत में हर चीज की गणना और जो भी दर्ज है वो सब काल के कारण है। ठीक है। कई बार लोग कहते हैं कि ये अलग अलग परिप्रेक्ष्य में लोग काल के बारे में बात करते हैं, लेकिन काल वैसे अगर देखा जाए तो ये एक सा रहता है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं आता। बल्कि इस जगत में जो कुछ भी चल रहा है, जो भी परिवर्तन आ रहा है, वो काल के प्रभाव के कारण आ रहा है, काल शक्ति के कारण आ रहा है। काल शक्ति कभी उसमें परिवर्तन नहीं आता, लेकिन इस जगत में जो भी परिवर्तन हो रहा है वो काल शक्ति के कारण है। तो इस जगत में जो कुछ भी गणना हो रही है, जो कुछ भी दर्ज हो रहा है, वो काल के कारण हो रहा है। काल का कोई प्रारंभ, मध्य या अंत नहीं, आदि मध्य अंत नहीं। काल के कारण इस जगत में आदि मध्य अंत होता है, काल का कोई आदि मध्य और अंत नहीं है। और इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है, चाणक्य पंडित भी बताते हैं कि एक क्षण भी यदि हमने जीवन का कृष्ण भक्ति के बिना यदि हमने गंवा दिया, तो वो जीवन का सबसे बड़ा
लॉस है, जीवन का सबसे बड़ी हानि है। बिना कृष्ण भक्ति के, बिना भगवान की सेवा किए हुए यदि एक क्षण भी हमने अगर हम खो देते हैं, तो वो हम करोड़ों अरबों रुपए देने के बाद भी वो समय वापस नहीं आएगा। और इसलिए वो सबसे बड़ी हानि मानी गई। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तित। भगवान कह रहे हैं कि मयाध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति जो है वो काम कर रही है। तो भगवान की अध्यक्षता में, भगवान के निर्देशन में ये जो पूरी प्रकृति है काम कर रही है। लेकिन भगवान की कौन सी शक्ति है जो इसको चला रही है? और वो है काल शक्ति, समय, काल शक्ति। तो इस जगत में जो भी हम सुंदर वस्तु, अच्छी वस्तु, जो कुछ भी देख रहे हैं, ये सब का स्रोत जो है वो काल शक्ति से प्रभावित है। काल शक्ति ही, आप देखिए यहाँ पर इस श्लोक में क्या कह रहे हैं मैत्रेय ऋषि, गुण व्यतिकरा करो। तो ये जो 3 गुण हैं जिसके कारण ये सृष्टि बनी है, ये 3 गुण के का जो मिश्रण है वो किसके कारण होता है? वो काल शक्ति के कारण होता है। तो यदि काल शक्ति नहीं है तो 3 गुण भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए काल शक्ति जो है वो भगवान का ही विस्तार है, भगवान की ही शक्ति है। लेकिन भगवान की ये वो शक्ति है जो भगवान का निमित्त है, और जिसके कारण इस जगत में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, इस जगत में भगवान की जो भी लीला हो रही है, जो भी कर्म है जीवों के, भगवान के, सब कुछ ये काल शक्ति जो भगवान की शक्ति है वो उसको चलाती है। भगवान की शक्ति है तो भगवान हमेशा उसके ऊपर है। काल शक्ति भगवान के ही निर्देशन में और भगवान के ही नियंत्रण में है, और जिसके कारण इस जगत में हम सब कुछ देखते हैं। 12वां श्लोक, विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रम् संस्थितं विष्णु मायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेन व्यक्त मूर्तिना। विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रम् संस्थितं विष्णु मायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेन व्यक्त मूर्तिना। ट्रांसलेशन, अनुवाद। This cosmic manifestation is separated from the Supreme Lord as material energy by means of Kal, which is the unmanifested impersonal feature of the Lord. It is situated as the objective manifestation of the Lord under the influence of the same material energy of Vishnu. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि भौतिक जगत भगवान से अलग है इस जड़ प्रकृति के द्वारा, काल के कारण। जो भगवान की ही निर्विकार निराकार शक्ति है, ये भगवान का ही भौतिक स्वरूप है जिसके कारण ये प्रकृति चल रही है। अब आप देखिए, कई बार हमने इसकी चर्चा भी की है अपने सत्रों में। कई बार हमने आपको बताया है कि जड़ जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच का अंतर क्या है? काल शक्ति। जड़ जगत में और भौतिक जगत में जो अंतर है वो काल शक्ति है। तो वही यहां पर मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं, देखिए आप, विश्वम वै ब्रह्म तन्मात्रम, ये जो विश्व है, ये जो जड़ जगत है, ब्रह्म तन्मात्रम, ये ब्रह्म यानी भगवान ही की शक्ति। संस्थितम विष्णु माया, ये जो जगत है ये विष्णु माया यानी भगवान विष्णु की माया है। ईश्वरेण, लेकिन भगवान विष्णु जो है वो ईश्वर है, परम पुरुषोत्तम भगवान है।
परिच्छिन्नम, उनमें, परिच्छिन्न मतलब काट देना, कटना, कटना मतलब अलग हो जाना। तो ईश्वर से ये जड़ जगत अलग कैसे होता है? आप देखिए, काले नाव्यक्त मूर्ति नाम, ये जो काल है ये भगवान की अव्यक्त मूर्ति है, यानी ये भगवान का निराकार स्वरूप है, जिसके कारण ये जड़ जगत भगवान से अलग होता है। आप देख रहे हैं, तो ये जड़ जगत भी भगवान की ही शक्ति है, ऐसा नहीं है कि ये भगवान से अलग है, लेकिन ये अलग प्रतीत क्यों होता है? काल शक्ति के कारण। वही कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। काले नाव्यक्त मूर्तिना परिच्छिन्ना, ईश्वरेण परिच्छिन्न, तो ईश्वर से ये जो जड़ जगत है ये अलग हो जाता है, किस शक्ति के कारण? काले, यानी काल शक्ति के कारण। अब ये काल शक्ति क्या है? वो भी भगवान की ही शक्ति है, भगवान की ही शक्ति भगवान की शक्ति को भगवान से अलग कर रही। तो ये जो जड़ जगत है ये भी भगवान की ही शक्ति, लेकिन ये भगवान ने बनाया है हम लोगों के लिए, जो लोग इस जड़ जगत में जो भगवान से विमुख हो जाते हैं उनके लिए ये शक्ति बनाई गई। ठीक है, तो एक तरीके से ये टेप रिकॉर्डर की तरह है, जैसे या कैमरा रिकॉर्डिंग होती है, तो आप किसी भी रेडियो पे या टेप पे रिकॉर्डिंग कर दोगे, या कम आप अपने मोबाइल पे कोई रिकॉर्डिंग कर दोगे, कुछ दर्ज कर दोगे, तो अब उसको आप, जैसे हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, आप लोग बाद में भी सुन लेते हैं, तो मेरी ही रिकॉर्डिंग है, मेरी ही शक्ति है, लेकिन काल के कारण वो अलग है। ऐसा नहीं है कि आप जब रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे ही सुन रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं भी सुन रहे हैं, है कि नहीं? वो आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। तो उसी तरह से जो काल शक्ति है, वो ये जो हम कह रहे हैं ना, अंतर, अंतर जो होता है, तो ये अंतर काल शक्ति के कारण आता है। इस जगत में सब कुछ परिवर्तनशील है, वो क्यों परिवर्तनशील है? काल शक्ति के कारण। ईश्वरेण परिच्छिन्नम काले नाव्यक्त मूर्ति नाम, तो ये काल शक्ति जो है ये अव्यक्त मूर्ति है, भगवान की शक्ति है, जिसके कारण ये जो जगत है ये भगवान से अलग लगता है, प्रतीत होता है। तो जिस प्रकार रिकॉर्डिंग जो है वो मोबाइल पे ही रहती है और आप कभी भी सुन सकते हो, उसी प्रकार ये जड़ प्रकृति भगवान के ही एक शक्ति के ऊपर स्थित है। भगवान की जो भौतिक शक्ति है, भौतिक प्रकृति है, जो पूरा जड़ जगत है भगवान की भौतिक प्रकृति के ऊपर स्थित है, लेकिन ये भगवान से अलग लगती है काल के कारण। जैसे रिकॉर्डिंग है, अब जब आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो आप बिल्कुल वही सुन रहे हैं जो मैंने अभी बोला है, लेकिन अंतर कुछ नहीं, अंतर क्या है? काल का, समय का। तो यही अंतर है जड़ जगत में और आध्यात्मिक जगत में। आध्यात्मिक जगत भगवान की अपनी शक्ति है, जड़ जगत भगवान की अलग शक्ति है, और वो अलग प्रतीत होती है काल शक्ति के कारण। 13वां श्लोक, यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादप्येतदीदृशम्, यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादप्येतदीदृशम्। Translation, अनुवाद, this cosmic manifestation is as it is now. It was the same in the past and it will continue the same way in the future. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। भगवान मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि ये जड़ जगत जैसा है वैसा ही पहले था और वैसा ही आगे भी रहेगा। अब आप देखिए, यथे दानिम तथा अग्रे, अग्रे मतलब जैसा पहले था,
पश्चात वैसा ही बाद में भी रहेगा और वैसा ही अभी भी है ये जड़ जगत। ये जो भौतिक प्रकृति है भगवान की, वैसे तो ये परिवर्तनशील दिखती है। जैसे हमारा जन्म होता है, फिर हमारी मृत्यु हो जाती है कि नहीं। इस जगत की भी सृष्टि होती है, फिर जगत में भी विनाश, इसका भी प्रलय होता है। तो सभी जो चीजें हैं, सभी जो वस्तुएं हैं, चाहे वो जीव हो, चाहे वो हमारा शरीर हो या ये जड़ जगत हो, इन सब की सृष्टि होती है और फिर इसका विनाश भी हो जाता है इस जड़ जगत में। ठीक है, तो उस हिसाब से ये परिवर्तनशील लगता है। लेकिन जो शक्ति है उसमें परिवर्तन नहीं आता। यानी कि ये जो भौतिक शक्ति है, जो जड़ शक्ति है भगवान की, वो वही रहती। जो जड़ प्रकृति है, प्रकृति के जो अंग हैं, प्रकृति के आप कह सकते हैं कि जो पदार्थ हैं, उनमें परिवर्तन आता है, लेकिन प्रकृति वैसी की वैसी ही रहती। तो ये जो परिवर्तन आता है ये किसके कारण होता है? काल शक्ति के कारण। और प्रकृति वैसी वैसी बनी रहती है, वो भी काल शक्ति के कारण। क्योंकि काल जो है, काल शक्ति, उसमें कभी परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, तो हो सकता है आज जो वस्तु है वो कल न रहे, लेकिन वो वस्तु की शक्ति, शक्ति को कभी आप बिना उसका नाश नहीं कर सकते। शक्ति तो वैसी की वैसी रहती है। हाँ, अभी वो हमको दिख रही है और बाद में नहीं दिखती। जैसे आप मिट्टी से कोई बिल्डिंग बनाते हैं, फिर वापस वो बिल्डिंग मिट्टी में मिल जाती। वो मिट्टी से आया, मिट्टी में मिल गया, तो है तो वो मिट्टी ही। उसी प्रकार से ये प्रकृति, ये जड़ जगत भी कभी कभी ये दिखता है, कभी नहीं दिखता है, लेकिन जगत कभी, जगत हमेशा रहता है, प्रकृति हमेशा रहती है। एक समय में उस वो दर्शित होती है और एक समय में दर्शित नहीं होती। और ये किस कारण होता है? ये भी काल शक्ति के कारण ही होता है। दिखना, नहीं दिखना, प्रलय, विनाश, सृजन, जन्म, ये सब काल शक्ति का प्रभाव है। तो कितने शक्तिशाली ये शक्ति है भगवान की, भगवान का निमित्त है, वो हम देख सकते हैं। मैत्रेय ऋषि इसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। तो अभी और इसके बारे में हम देखेंगे अगले सत्रों में। आज का सत्र यहीं विराम देंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।